आप लोग चैट में लिख सकते हैं यस नो. Hello everyone. You can write yes, no in the chat, guys. Can you hear me? Okay, great. Thanks for confirming. We will be starting the session soon. Krish Bansal ji, I hope you can hear me because everyone else can. हमने कल BTSC दिया था IPCA Labs का it's trading in profit, not reached our target yet, but it's still in profit. We'll ask our expert to share some view on that as well. You are not visible. My camera is on. Guys, I am visible. Is other people can respond. Okay, just give me a second. Am I visible now? Okay, great. Thanks for confirming. सब इंग्लिश नहीं जानते होंगे. यस सागर जी, सब लोग इंग्लिश नहीं जानते होंगे, इसलिए हमारा सेशन हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहता है. नो नीड टू वरी. We will be starting soon. Let me just check with the expert. Shivangi ma'am, I've sent you an invite. You can join in the stage. This is the last morning session for the week, guys. We have our Nifty expert, Ms. Shivangi Sharda, here with us. आज Friday मयूर जी, इसलिए हमारा last session है for the week. We have an afternoon Sensex expiry as well. Good morning, ma'am. I hope you can hear me and see me clearly. Yes, thank you so much, Anuj. I can hear you, see you. Great, and thanks a lot for taking out time on your birthday. Happy birthday, ma'am, and thanks a lot कि आपने birthday के दिन भी time निकाला to join Stockmo and get on with our members, answer their queries, share your market analysis. So guys, it will be great अगर आप मैम को birthday wish करें before we start. And meanwhile, इतनी सारी birthday wishes आ रही है. I guess we can start the session. So good morning, everyone. Thank you so much. Thank you so much. And it's really, मैंने कल भी बताया था कि it's so warm being here and to see the welcome messages and आप सब मुझे birthday भी wishes कर रहे हो. Thank you so much. So of course I had to come here and of course आज कुछ तो special मैं दूंगी and let's see how the session turns out. But thank you so much guys for all the love. So that's the start for the session, guys. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. A lot of you know us because you have been a regular part of these sessions. Some of you are new. So starting from the brief intro, the morning session takes care of stocks, equity, and afternoon takes care of our derivatives. So आज जैसे कि Sensex expiry है, तो आज हमारा afternoon session जो होगा वो Sensex के around ही revolve करेगा. And we'll have our expert Mr. Madhur Mandwaga who will be taking care of the session for us. And in the morning, जैसे कि मैंने बताया, we have Shivangi Sharda ma'am with us, and I guess we are all set, ma'am. You can share your screen and start probably with the update on the BTST and then towards the market. Yes, thank you so much. I just want to share my screen. Yeah, that's my screen. So, guys, hello and welcome. Thank you so much for all the birthday wishes and thank you so much for so much blessings. It really means a lot. And of course, at this platform where we all can connect, I had to come here, even though it's my birthday. I had to get all your blessings. So guys, yes, दुआ में याद रखना. Okay, let's start off. सबसे पहले हम BTST की बात करते हैं, फिर हम stocks में आ जाएंगे. So कल BTST में हमने
उसका लैब डिस्कस किया था एंड आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक इज अप बाय अनदर 1.5%. स्टॉक touched an high of 1393. So I hope you all have made good money. You all can book profits and अच्छा यहाँ पे एक मूव दिखा है, फॉलो अप एक्शन दिखा है. So that was the update on BTST. One more stock which is looking quite positive and which I have said on this platform a lot of times as well, which is Zomato. Recently it's come out of its triangle pattern formation breakout दे रहा है ये stock वहाँ से और at any level Zomato looks quite positive. बहुत ही अच्छा stock है. And I would give this as a reiteration or वापस से emphasizing on a buy on this trade. So Zomato is looking quite positive, guys. 270 चल रहा है अभी. इसमें हम expect कर सकते हैं immediately 280 and then 300 levels. You can watch out for. पूरे QSR space में काफी एक positive stock है. And second, very important, Blinkit जो इसका negative point हुआ करता था एक time पे, now it's become a positive for this company. It's become a strength for this company. And we've seen the kind of growth this company has seen in the last 2 years, especially. तो काफी positive है. So Zomato will be the preferred pick for today. And for long term as well अगर आपको लेना है. So yes, thank you so much guys. Thank you so much again. I'm getting a lot of messages, so yes, thank you so much again. मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ but दिल से सभी को thank you so much. Right? Okay. वापस अब निफ्टी पे जाते हैं, उसमें क्या हो रहा है देखते हैं. There has been a gap up opening today in Nifty. देखिए ग्लोबल कंसर्न्स तो हमें कहीं ना कहीं एक हेडविंड दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं ग्लोबल, चाहे वो यूएस का रिसेशन डेटा हो, चाहे वो कहीं वॉर का डेटा हो, चाहे वो बांग्लादेश का कुछ हो, बट ऑल फैक्टरिंग इन, हम अगर ग्लोबल कंसर्न से बार बार नहीं डर सकते. हम एक बार डरे, दो बार डरे, देयर वाज अ फॉल इन द लास्ट 3-4 सेशंस, बट उसके बाद जिस तरह से हमारे रिटेल का लिक्विडिटी है, जो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में जो एवरीडे पार्टिसिपेंट्स का इनफ्लो है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है. सो दैट इज द रीजन व्हाई निफ्टी इज होल्डिंग ऑन टू द क्रूशियल सपोर्ट जोन्स. और अभी ये पूरे रीसेंट रैली का भी एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट लेवल पे ही आके वापस सपोर्ट लिया है निफ्टी ने. So, quite positive from here in the broader term structure, but intraday swings zarur rahenge because of global concerns. Because somewhere or the other, intraday trades are, the opening per se is, affected by what is happening globally. तभी हम सुबह उठते ही SGX देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे. गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, डाउ क्या हो रहा है रात को हम देखते हैं, राइट? आप सब देखते हो, सोते नहीं हो आप लोग? Okay, so this is how we are affected by global markets. Opening हम जरूर global markets के हिसाब से करते हैं, but उसके बाद का जो movement होता है, that is purely dependent on our market. So we are seeing gap up opening हुआ है. Even SGX, beg my pardon, Gift Nifty and Dow was positive yesterday and today in the morning. But we've seen that, even after the gap up opening, Nifty is sustaining above 24,400 odd levels, 400 के आसपास है. So this is a good sign. We can go for buy on decline strategy over here. The reason why I'm explaining you so much is कि आपको पता रहे कि आप ट्रेड ले रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है. Second is India VIX. India VIX आज डाउन है by another 6%. कल हमने पिछले 3 दिन से ही हम देख रहे हैं कि एक 23 के लेवल्स टच करने के बाद कूल ऑफ हुआ है. सो दिस कूलिंग ऑफ इज इंडिकेटिंग दैट बुल्स आर कंफर्टेबल इन एट दीज लेवल्स एंड एक अच्छी खासी अपमूव हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया विक्स इज नाउ सस्टेनिंग एट लोअर जोन्स. अब इंडिया विक्स अगर 15 के नीचे जाता है तब हम पूरे तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे. But right now we might witness some swings, but the overall stance will be buy on decline. So we can look at next levels of 24,600 in Nifty with a support of 24,250. So 24,250 के एक base को बनाना और इसको याद रखना.
and for next 24,600 would be the level. Now talking about bank nifty, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है. अंडर परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत कंटिन्यू यहाँ पे देखी थी हमने पिछले कई सेशन से, बट टुडे इवन आफ्टर द गैप अप बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अबव 50,500. So 50,500 will become our make or break zone over here. यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज बैंक निफ्टी का टेंडेंसी क्या हो रहा है फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स कि जहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है वहां पे गिव अप हो जा रहा है, वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं. सो दैट इज द रीजन वाई 50,500 बिकम्स इम्पोर्टेंट. अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पे बाय डिक्लाइन जो स्टांस है वो प्ले आउट करेंगे, और एल्स वी माइट सी सम कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन यानी कि रेंज बाउंड हो सकता है, एक रेंज, एक छोटे रेंज में काम कर सकता है. दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट बैंक निफ्टी, बिकॉज मोमेंटम ज्यादा है नहीं यहाँ पे. काफी दिनों से हमने देखा है कि शॉर्ट बिल्टअप हुआ है बैंकिंग इंडेक्स में, और HDFC बैंक को छोड़ के किसी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया है बैंक निफ्टी को ऑफ लेटली. So we'll have to see some of the smaller names also start supporting bank nifty. आप देखे होंगे after the budget till date, we've seen that smaller banks have not performed at all. So that is also one reason why bank nifty is not kind of gaining strength. So because of course यहाँ पे heavy weights है, smaller banks भी है. Now heavyweights are moving, but heavyweights आप देखोगे कि they can't move 6 to 8% in a day. बहुत वन ऑफ होता है कि एक दिन में 8-10% मूव हो जाए. For bank nifty to move in such manner, heavyweights need to move that much, but वो उतना होता नहीं है. One of course exceptions हो सकते हैं किसी दिन, but this is the reason why small banks need to also perform for bank nifty to gain strength. Now, levels we've already mentioned in Nifty, or Bank Nifty की अगर हम levels बात करें तो next will be 51,250 and 50,250 will be the support. So 50,250 will be your base and upside 51,250. So ये 1000 point के range बन रहा है Bank Nifty में. I know Bank Nifty के लिए 1000 point is a little comparatively smaller range, but this is how Bank Nifty has been performing in a range. So we're not expecting much of a move here. Right? Bank Nifty IVs are also at 19 levels, which is quite low. IVs Bank Nifty के 28-30 के आसपास होते हैं. तो अभी अगर 19 पे levels पे आ गया है, so it's showing that volatility is less and कम swings हो सकते हैं. Okay. Gunjan, I've already updated about the IPCA Lab BTST. Now, Sensex पे आ जाते हैं, then we'll take up the stock queries. आज Sensex expiry है, guys. आज Friday है. To be able to understand Sensex, आप बहुत सारे clues Nifty से भी ले सकते हो, because the weightage is almost same. Of course, Sensex has 30 stocks and Nifty has 50 stocks, but yes, most of the stocks are same, and काफी correlation भी है Nifty और Sensex में. Now, to understand Sensex, यहाँ पे gap up opening हुआ है, but we've seen that ये candle जो है, आज का daily candle जो है, आज का open और high same है. Now, when open and high are same, this is the magic trick that I'm telling you today. The birthday gift from me to all of you, right? अगर जब भी कैंडल का ओपन और हाई सेम होता है, that means there is some sort of pressure जो उस दिन रह सकता है उस इंडेक्स में या उस स्टॉक में, right? If you're seeing the daily candle, it will be on the daily basis. If you're seeing the weekly candle, it will be for the weekly basis. So ये ध्यान रखना, ओपन हाई अगर किसी का सेम है तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा उस दिन, right? Because after its opening level, it's not been able to surpass that higher zones. So this is what the logic is. Now, open similarly, जब open low same होता है for some counter, suppose there is one counter where the opening and the low zones are same. That means वहाँ पे बहुत strength है वहाँ पे, and we are seeing कि opening जहाँ पे हुआ था उस levels को तोड़ नहीं पा रहा है, because that becomes a low. So open low means bullish stance, very good for the stock and or index. Open high means that some sort of pressure might be there, right? तो ये है एक candlestick आप देख सकते हो. This is this works like magic in stocks, in indexes, in all the chart frame. If you see the daily, if you see the
वीकली अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप 15 मिनट या 1 घंटे के कैंडल में भी ये देख सकते हो. दिस वर्क्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? ओके, so now I think we've discussed index. Okay, levels की बात कर लेते हैं हम. I just skipped. Sensex की अगर हम levels की बात करें तो हम देख रहे हैं कि open high same है. Even though the broader market is positive, Sensex has not been able to surpass its opening levels on the higher level. तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत pressure देखेंगे, right? सो रेंज बाउंड मूव रहेगा, बट बीवैप के ऊपर ही है हम नियर अबाउट. तो कहीं ना कहीं तो बुल्स नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट कर लेंगे, पर क्योंकि ओपन हाई सेम है तो फॉलो अप नहीं रहेगा सेंसेक्स में. सो ऑफ कोर्स दिस इज द स्टांस फॉर राइट नाउ. if it uh, if it manages to hold above 80,000, जो कि आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट अगर 80,000 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो वहां पे वापस स्ट्रेंथ बनने को रहेगा. सो फॉर लेवल्स 80,000 विल बी द नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल फॉर सेंसेक्स. एंड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 79,500 would be a make or break zone over here. तो इस लेवल्स को एकदम लक्ष्मण रेखा बनाना है हमें. 79,500 के नीचे अगर इंडेक्स ट्रेड करता है then we'll definitely go for sell on bounce. So somewhat range bound move, somewhat pressure will be there in Sensex, right? जबकि निफ्टी हायर जोन्स पे कई कुछ हद तक होल्ड कर रहा है. इवन बैंक निफ्टी इज होल्डिंग, but Sensex is not holding, right? Let's go to Ipca Lab once more because I've seen messages. So the stock is up by around 1.5%. BTST में भी हमने दिया था. So yeah, y'all, I updated in the morning as well, book profits करने. So yes. Okay. Anuj, we'll take up a few questions. Sure. Let me just scroll up. Dr. Reddy. Okay. So Dr. Reddy में अगर हम बात करें, so entire pharma space is quite positive for that matter. And even we've seen that from the last 6-7 weeks यहाँ पे consistently buying हुआ है, supports are shifting higher, stock is positive. और जब तक market में थोड़ा बहुत pressure रहेगा when India VIX is above 15, जब तक ये सिनेरियो रहेगा तब तक डिफेंसिव नेम्स काम करेंगे. अब डिफेंसिव में क्या आता है? फार्मा आता है, लैब या डायग्नोस्टिक स्टॉक्स या फिर कंजम्पशन नेम्स. सो दीज आर द स्पेस व्हिच डज रियली वेल व्हेन मार्केट्स आर नॉट डूइंग सो वेल. आप देखे होंगे इवन Tuesday session, yes, Tuesday it was. Tuesday session, we've seen that सारे ही stocks mostly gloomy थे, negative closing हुआ था. But HUL was one stock which did quite well because HUL अपना position एक पूरे proper defensive में ही अपने आप को बनाए रखा है market में. So that is how defensives and market move. They have a negative correlation because defensives में कभी कुछ सेंटिमेंट इफेक्ट नहीं होता है. अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मे बी यू आर कंसर्न्ड अबाउट द रिसेशनरी लेवल्स और मे बी यू आर कंसर्न्ड अबाउट द सीपीआई डेटा और एनीथिंग लाइक दैट. तो आप अगर आपको इन्फ्लेशन से डर है, आपको रिसेशन से डर है, तो शायद आप गाड़ी खरीदने वाले हो. इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, यू माइट डिले इट, राइट? But that your sales might get delayed, right? But you're not going to stop eating food. आप दिन के जो रोटी चावल खा रहे हो वो तो खाओगे, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे वो slow down हो इकोनॉमी में. So that is the reason why consumption stocks don't face a hit, even though markets don't do well at such times. तो इसीलिए कोविड के टाइम पे भी there was the best stocks were FMCG, consumption, and pharma diagnostics. Pharma diagnostics, of course, because it was a situation, the entire country की pharma चाहिए था हमें for the best of labs and everything. But yes, consumption का ये logic होता है. Yes.
मैम तनुज जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ओला? Okay, Ola का IPO अभी just it's a IPO stock, so of course हम इसमें technical data तो कुछ रहेगा नहीं, but check the fundamentals, check the company um, overview before investing, of course, और फिर आप देखो आप कैसे plan out होता है. मैम संजय जी का क्वेरी है, व्यू ऑन आईईएक्स. Okay, so let's just quickly go to IEX. Now, energy stocks have, consolidated for some point of time, but this stock we are seeing weekly basis पे काफी strong है, and आज of course weekly close भी हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, but monthly basis में it's forming a rounding bottom, so you can continue being here, and the stock is right now in a range bound manner. तो आप अगर आज intraday trades के लिए लिए हो तो शायद आप फंस सको, but positionally there is no problem. You can continue being here. The next targets would be around 220 positionally. मैम मृणाल जी का है, आरवीएनएल गुड टू बाय नाउ और नॉट? Yes, I remember हमने railway stocks के ऊपर last week ही discuss की थी, um, and I told you that you can avoid railway stocks for now because budget के बाद हम हर बार देखते हैं कि the railway or stocks specifically they see some sort of profit booking. So guys, जैसे कल भी मैंने बोला था ना आपको कि market is very smart. तो वो prices already factor in कर चुके होते हैं. So even people expect कि बजट में बहुत कुछ अच्छा आएगा रेलवे के लिए या वैसे कुछ, तो उसके बाद खरीद के रखना चाहिए, but ऐसा नहीं है. People like you, smart investors are there in the market who already discount all this factor in और बजट के पहले ही खरीद लेते हैं और बजट में बेच देते हैं, right? So this market becomes um, you know buy on rumor, sell on news, ऐसा टाइप का मार्केट हो जाता है. So that is why after every budget there is some profit booking in railway stock specifically, क्योंकि हर बार लगता है ना हमें कि रेलवे के ऊपर कुछ कमेंट्री आएगा, कुछ डेवलपमेंट के लिए उधर, right? But yes, this is how it works, so I would definitely say avoid for now. मैम आई गेस पीपल आर वेटिंग फॉर द इंट्राडे ट्रेड. Yes, so Zomato is what I discussed, and वही काफी अच्छा लग रहा है. Zomato is one trade that you all can take, and it's quite positive, and इसका आप देखो open low लगभग same है, near about, so looking quite nice, और एक triangle breakout दिया है stock में. Otherwise भी positionally it's a must have in your portfolio, and trading के लिए भी आज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये stock, so one can look for Zomato. मैम व्हाट विल बी द टारगेट स्टॉप लॉस? So the immediate target would be around 280 and then 300. दो targets हैं यहाँ पे, 280 and then 300, and you can put a stop loss of 265, जो कि आज के दिन का लो के पास है. So guys, we have the intraday trade for the day. Zomato 270 is the buying range. Stop loss is 265. Target is 280 to 300. 280 and 300. We have two targets. Okay, Deepak is asking intraday কিছু বলে দিয়েছি. That is Zomato trade, right? Okay, so that's Yeah. I thought he wrote it wrong, but that's another language. Yes. So I know a lot of languages. So yeah. Next month we have view on NBCC 30 shares at 193 from Srisha ji. Okay, Shichaji, NBCC, if you sorry, beg your pardon. So NBCC, if you look at the longer term structure of this stock, it's quite positive. We've seen a good amount of buying at every small decline, so positive. One can continue being here. 185 is what I'm looking at next, and 162 would be the support to watch out.
Ma'am, your view on Gale? Um, Sorry, Gale. Gale. Okay. Gale is one stock which is a very slow mover. ये मूव भी करता है तो काफी अपने धीरे 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 पेस से मूव करता है, तो पेशेंस लगने वाला है बॉस यहाँ पे तो intraday there is no scope of any trade over here, but if you have taken the stock, then you can continue being here with a lot of patience. Somebody's asking next week 25,000 call of Nifty, can I buy? Sorry. So guys, एक चीज समझना बहुत important है in the entire options market is if you're having a positive view on the index, अगर निफ्टी में भी हम expect कर रहे हैं कि there is going to be an upside, if you buy a call and if you keep it, it's going to hurt you because as you are a buyer, time decay will always work against you. तो जैसे ही आप बाय करते हो फ्रॉम द टाइम यू बॉट देर इज वन component which is called time value of money which works against you. वो एक्सपायरी के जैसे जैसे हम टूवर्ड्स आते हैं वो टाइम वैल्यू component कम होता रहता है. सो इफ यू आर बाइंग समथिंग एट 100 तो वो ऑटोमेटिकली कम होते रहता है टाइम वैल्यू का जो component है. बाकी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू component अगर हम बात करें which is linked to the movement in the index. Ab suppose Nifty agar it moves by 200 points and then we've seen a good 50-60 points move over here in the options also, then that is the intrinsic value move. That is not the time value move. Time value move हमेशा negative होता है क्योंकि वो कम करता रहता है option के प्राइस को, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जो मूवमेंट के हिसाब से होता है. अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा, अगर इंडेक्स गिर रहा है तो पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा, राइट? So my point here is if you are having a positive view, do not buy a naked call and keep it till the expiry because time value is always hurting you against you if you're a buyer. अगर आप seller हो तो वो आपके लिए beneficial है. Now, if you're having a positive view, what you can do is instead you can go for a bull call spread by buying near about at the money या उसके पास का. आप अगर 25,000 की कॉल को खरीदोगे जो कि अभी 600 पॉइंट दूर है, वहां का आपको कोई मूवमेंट ही नहीं मिलेगा बिकॉज द डेल्टा इज क्वाइट लो, डेल्टा ऑफ द ऑप्शन. सो यू विल हैव टू बाय एट द मनी ऑप्शन और फिर थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो बेचना होगा. दिस वे यू कैन मेक अ बुल कॉल स्प्रेड. तो आप हेज्ड हो इस पोजीशन में एंड यू कैन आल्सो टेक द मूवमेंट ऑफ द लिमिटेड अपसाइड. इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, आपका रिस्क भी प्रोटेक्टेड रहेगा. लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी. I know थोड़ा सा काफी था, but I hope you all understood because ये बहुत important है समझना before trading in options. So I thought Anuj बहुत important था सबको समझाना because I keep getting some messages like this on an everyday basis इसी platform पे. So I thought let me take just 2 minutes and explain this to you all of you. I can see there are many queries still pending, but apparently we don't have enough time for it. But we did try, and you can ask your questions on Stockholm. We'll be happy to answer. Shivangi ma'am, this would be the last question for the day. A view on HDFC Life for 12 months. And the question is by True Soul 412. If you're planning to take a stock for 12 months, of course, you need to diversify first your portfolio and not invest your whole money in one stock. But HDFC Life is quite positive. There is no problem in this stock, and even the long-term structure is quite positive. So you can be in this stock. Slightly, there might be some sort of consolidation for the next 2 months. So yes, Mayur ji has written आप आज आपने learning session भी cover कर दिया. Yes, I told you I want to give something very special to all of you today. So yeah, I hope you all enjoyed the concepts that I discussed. So that will be all, guys. Thanks a lot, Shivangi ma'am, for joining in. And once again, happy birthday. Hope you have a great year ahead and you had an amazing year. And you will get all the love from Stockholm family.
And I guess the learning part of the morning session was pretty good. Everybody loved it. So see you again next week, and see you everyone at 2:30 p.m. for the Sensex expiry with our Sensex King Madhur Sir. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Have a lovely weekend, and thank you once again for all the lovely wishes.